आज का टॉपिक है हार्मोन्स। आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये यूनिट 1 में इसके बारे में है केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। तो उसके साथ साथ बताना ज़रूरी था। हार्मोन एक ग्रीक वर्ड हॉर्मेन से बना है, ग्रीक वर्ड जिसका मानी होता है मीनिंग टू एक्साइट, टू स्टिमुलेट। हार्मोन्स किसे कहते हैं? केमिकल्स सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो केमिकल सेक्रीट करता है उसको हम हार्मोन्स कहते हैं। आप छोटे क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, इसमें लिम्फ भी आ गया, टू द ऑर्गन्स और पार्ट वेयर दे एक्ट एज, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन पैदा किया, सेक्रीट किया, वो लिम्फ और ब्लड में डाल देता है, वहाँ से उस ऑर्गन तक जाता है जहाँ के वो काम करता है। हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड वैस्कुलर सिस्टम टू द ऑर्गन्स और पार्ट वेयर दे एक्ट एज, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रीट किया, वो ब्लड में डाल दिया, ब्लड के जरिए उस ऑर्गन, उस पार्ट, उस सेल, उस टिश्यूज तक जाएगा जहां वो वर्क करेगा। कैसे और वर्क करेगा? एज हार्मोन एक्ट्स एज इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल, यानी सूचनात्मक अणु। एक्ट्स एज केमिकल मैसेंजर, फर्स्ट मैसेंजर होता है ये। रेगुलेट्स, activates or inhibits one or more physiological process, यानी एक या एक से अधिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ये रेगुलेट करता है, एक्टिवेट कर सकता है या इनहिबिट कर सकता है। कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ वेरियस बॉडी फ्लूइड्स, कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ वेरियस बॉडी फ्लूइड्स। सेक्रेटिन एक हार्मोन है, सेक्रेटिन, इट इज ट्रेस्ड आउट फ्रॉम डुडेनम, यानी डुडेनम से ये निकाला गया है। इट इज द फर्स्ट हार्मोन एंड इट वाज गिवन बाय स्टार्लिंग एंड बेलिस इन 1902। टर्म हार्मोन was given by स्टार्लिंग, जो छोटे छोटे नीट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन कैसे होता है, जिसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है ईजी। ईजी मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड। दिस एंडोक्राइन ग्लैंड secretes H, H means hormone, into ECF. ECF means extracellular fluid. This extracellular fluid is circulated by circulatory system CS. Circulatory system includes blood or lymph to the cell where they act, and that cell is known as target cell. That's known as target cell. फिर से एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रीट्स केमिकल कॉल्ड हार्मोन इनटू ECF, extracellular fluid. This extracellular fluid pours it into circulatory system, means into blood or lymph, and this blood or lymph transmits it, carried it to the target cell. Hormone functions in and around the area of production. Such hormone is called local hormone. Means ये एरिया है, ये रीजन है जहाँ से ये हार्मोन सेक्रीट करता है, और ये हार्मोन विद इन दिस ऑर्गन या अराउंड दिस ऑर्गन अगर वर्क अपना कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लोकल हार्मोन। एग्जाम्पल डबल एस हार्मोन। डबल एस हार्मोन मीन्स सोमेटोस्टैटिन। डबल एस हार्मोन मीन्स somatostatin, and this somatostatin is secreted by delta cell of pancreas.
And this delta cell of pancreas, this somatostatin controls secretion of beta and alpha cell of pancreas. इसको मैं रिपीट करना मुनासिब समझता हूँ कि ये somatostatin ये लोकल हार्मोन है. This hormone is secreted by delta cell of pancreas, and this hormone controls the secretion of alpha and beta cell of pancreas. This point is very, very important. Target organ, that organ or structure or cell or tissues where hormone acts, means where a hormone shows its effect. So this target organ is of three types: primary, secondary and final target organ. PSF, primary target organ, secondary target organ and final target organ. The hormone is target organ primary, then is to the secondary and then passes to the final target organ. Is how it will be explained. मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, मैं बताता हूँ. तो this final target organ is morphophysiological in nature and primary and secondary target organ is secretory in nature, जो हम इस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे. Hypothalamus is a part of brain, roof of brain. This hypothalamus secretes, suppose one of the is TSH-RH. TSH-RH means thyroid cells stimulating hormone releasing hormone or releasing factor. This hormone acts on anterior pituitary, जिसको मैंने short पे लिखा है anterior pituitary, AP. The anterior pituitary is primary target cell or organ. Primary target cell or organ. On the advice of this hormone, this anterior pituitary release TSH, thyroid cell stimulating hormone, on which acts on thyroid gland. So this thyroid gland is secondary target cell or organ. And on the advice of TSH, this thyroid gland release hormone thyroxine, and this thyroxine hormone acts on the many cells of the body and controls various functions of the body, various metabolic activities of the body. That is why these cells of the body is third or final target organ, FTO. I hope that from this example, it will be very clear that target organ, hypothalamus, releases this hormone, and this hormone acts on this, and it's release TSH. AP release TSH. This TSH acts on thyroid gland. This thyroid gland release thyroxine. इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा है primary target organ and secondary target organ is secretory in nature, and the final target organ which is morphophysiological in nature. For example, Sertoli cell, testosterone acts on Sertoli cell, and then Sertoli cell gives the motility to the sperm and shows various functions. Here the Sertoli cell is final target organ. The next term is neurohormones. Neurohormones, the hormones secreted by hypothalamus or NSC. NSC means neurosecretory cells found in hypothalamus. This is the center, this is the center, this is the center. This is called NSC, and this NSC secretes certain chemicals. These chemicals are called neurohormones. So these neurohormones are of two types. One is releasing, another is inhibitory. Releasing means to stimulate, to release, or inhibitory means to stop the functions.
The RH short, in short I have written here, RH means releasing hormone, RF means releasing factor. For example, TRH, thyroid releasing hormone, testosterone releasing hormone, or releasing RIH, inhibitory hormone. That is, example is PIL, prolactin inhibitory hormone. PIL, prolactin inhibitory hormone, ये example है. TRH is the example of neurohormone of releasing factor, and PIL, that is the inhibitory factor. Glandular hormone. Glandular hormone means hormone secreted from endocrine gland. EG I have written in short. EG means endocrine gland. And EG. Glandular hormone means endocrine gland. These are two types: trophic, non-trophic. Trophic hormone which controls activity of other endocrine gland. Non-trophic which directly affects body parts. Example TSH. अब नॉन ट्रॉपिक में हम चलते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट्स बॉडी पार्ट्स. ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट, दैट इज मॉर्फोजेनेटिक, मेटाबॉलिक, इथोजेनिक एंड काइनेसिजेनिक. There are four basic types of non-trophic hormone. One is morphogenetic, means which controls GD square. GD square means growth, development and destruction or differentiation. Growth, the development and the differentiation. Next is metabolic, means hormone which controls metabolic. This is also non-trophic. Ethogenic means which controls behavior. This is the main topic of your unit. We will discuss later on. Behavior, which controls behavior, and kinesigenic means which controls movement. Now come to the next topic is chemical nature of hormones, which is one of the topic of your course. The chemical nature is amines, means amine group is present. Example, man. Example is man. Man means melatonin, adrenaline, non-adrenaline. The adrenaline and non-adrenaline are derivatives of catechol or 2-hydroxyphenol. That is why they are called catecholamine. फिर से सुनिए, melatonin, man is the example of amine hormone. Man means, M means melatonin, A means adrenaline, N means non-adrenaline, man. So these two hormones, adrenaline and non-adrenaline, are the derivatives of catechol or 2-hydroxyphenol. That is why these two hormones are called catecholamine. The next group is amino acids. Thyroxine is the example of amino acids. Next is peptide. Peptides may be short peptide, long chain peptide. Short chain peptide means oxytocin and ADH. It has only 9 amino acids in each. That is called nonopeptides. And long chain peptide, the example is ACTH, calcitonin, GH, MSH. And the next one is protein or polypeptide, the GIR, HCG. GIR means growth hormone, growth inhibitory hormone, etc. Next there is glycoprotein. These two are the glycoprotein, very important. Steroid for cholesterol and other. The PET means progesterone, estrogen and testosterone, ACC. These are the example of adrenaline, etc. Progesterone, estrogen, testosterone, aldosterone, calcium, etc. The fatty acid hormone, prostaglandins. This is the
unsaturated fatty acids, prostaglandin. Now come to the properties of hormones as first chemical messenger or information molecule, acts away from production side. जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पैदा होता है, यहाँ टारगेट ऑर्गन पर यहाँ काम करता है. इफेक्टिव इन वेरी लो कंसंट्रेशन इन पाइकोग्राम और नैनोग्राम, मैंने कम क्वांटिटी चाहिए. स्मॉल इन साइज, डू नॉट प्रोवाइड रॉ मटेरियल और एनर्जी, कोई भी हार्मोन नहीं प्रोवाइड करता है. फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी कोई भी हार्मोन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ही काम करना शुरू करता है या रिलीज होना शुरू करता है. मे बी फॉर्म्ड इन एक्टिव स्टेट, इनएक्टिव स्टेट, प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग एंडोक्राइन सेल्स और ग्लैंड्स, मतलब नॉन लिविंग यानी मरे हुए में नहीं होता है. नेवर स्टोर्ड इन द बॉडी एक्सेप्ट थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन को छोड़कर कोई भी हार्मोन स्टोर नहीं होता है. नॉन एंटीजेनिक, बोथ एक्सेस और डेफिशिएंसी कॉजेज डिसऑर्डर, यानी दोनों कंडीशन में बीमारी होती है. हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, और ये सोल्यूबल इन वाटर एंड नो क्यूमुलेटिव इफेक्ट. क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब है कि स्टोर नहीं होगा, जमा नहीं होगा. आई होप दैट this lecture will be liked by you, shared by you and subscribed by you. Thank you.